So अभी मेरे को I have to taste these two waters and tell you which is expensive and which is cheap. To be honest, मेरे को 2 रुपए वाला पानी और 10 रुपए वाले पानी में फ़र्क लगता नहीं है, as long as it is really bad. I'm the master chef, so let me check. All I can say is that इस glass में fingerprints ज़्यादा हैं. But let's go to the tasting. Okay, this water smells better. This smells like tap water. बचपन के दिनों की याद दिला दी इसने. So let's go on the tasting. Oh, this reminds me of my dadihal. This reminds me of my future. I think this is expensive water. Are you sure? Yeah. देखो मैं बहुत ज़्यादा claim कर रही हूँ, तो अगर ये गलत है तो dadihal, I love you all very much. It's just a funny element. But yes, I think this is expensive water. पक्का? Yeah, I think so. Yeah. So sure. Yeah. This is the expensive water. Lock कर दे? Yes. एक और बार. This is the expensive water. तो कशिश का ये जवाब. He told you! I have a taste for expensive things. I knew it. So now I have cheap versus expensive cheese balls. So basically 10 rupees versus 50 rupees. Let's check. नहीं, अब वो 10 वाला होगा तो फिर 250 भी हो सकता है. This smells like the cheese balls जो मैंने खाए हुए हैं. And मैं कभी भी personally cheese balls पे 250 रुपए तो नहीं खर्चूंगी. So this has to be cheap. This smells more like cheese. This also smells like cheese, but like very balanced amount of cheese. If my dietitian is watching it, it's only for show. I'm not eating it. This actually, ये जो है ना, तो इसका taste is like मुंह में डालो और immediately कुछ feel होगा for like a second, but then it goes away. This is like expensive wine, कि उसका taste gets better. Damn, I could be a chef or a food critic. I think this is expensive. I think so, yes. Lock कर दे? Yeah. I think this is expensive. ये जवाब भी सही है. I have a thing for expensive shit, guys. I have a taste for expensive things. I knew it. It's 2 for Kashish and 0 for API. I knew it. I knew it. Now you know why I like tasty भैया मेरा. So this is difficult. Here they're both chocolate. And if you think कि oh this is fancy looking तो ये expensive होगा, let me tell you, a lot of cheap shit is fancy looking, and it is not referred to chocolates, if you know what I mean. But let's do the texture testing. Texture wise मुझे ये थोड़ा better लग रहा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं chocolate को दबाऊँ तो वो दबे. Let's smell them. It has that chocolatey smell like Cadbury. It also has chocolatey smell, but like Swiss chocolate, Lindt, shit. ये वो है. This is वो red वाले box में जो आता है. I know Nutties. This is Nutties. I don't know if you count Nutties as cheap or expensive. I buy it, so it's not expensive. This is Nutties, so this has to be the expensive one. If you count Nutties expensive, then I'm sorry, I'm walking out of the show.
Jokes apart, I think ये वाला expensive है. कर दे Yeah, this is Nutties. नटीज ना हुआ तो ये क्या बात हुई? Wait. I know this also. This chocolate is the one जो ऐसा yellow, green, red wrapper में आता है. No, I eat a lot of cheap shit, guys. I don't know. I don't actually. Expensive only. ये तो Nutties है, bro. ये तो ये वो red डब्बा वाला है. तो I think this. इसका एक और है She's trying to gaslight me. मैं इसी से जाने वाली हूँ. मैं तो आपकी हेल्प कर रही हूँ ये हेल्प ये पारी में भी कर रही थी और दूसरे वाली में भी कर रही थी. नहीं चाहिए ये हेल्प. ये बोलूँगी. लॉक कर दे Yes. बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है ये जवाब गलत हाँ. क्योंकि हमें उससे भी चीप चॉकलेट मिल सकता है आपको पता है So I mentioned it very clearly. If you count Nutties as expensive chocolate, then that's your fault. अपनी जगह पे मैं सही हूँ. अगर मैं सही नहीं हूँ, तो मैं गलत भी नहीं हूँ. मुझे benefit of doubt मिलेगा. I win. I don't drink coffee, guys. जैसा कि आपको पता है मेरा history with coffee. मैं घर से coffee भिजवा देती हूँ. I don't care about the others. I don't like coffee. But let's see. You know, अगर texture wise देखा जाए, तो this is smoother. इसका जो भी इसमें सामान था, whatever it contained, वो नीचे settle हो चुका है. And इसका अभी भी थोड़ा सा उखड़ा सा है, like बालू. Okay, this smells like a kadwi coffee. This smells more like, you know, the latte and all that bullshit. This is more coffee, this is less coffee, this is more chini. It smells like a chocolate shake. This is no sugar in it. So the thing is कि इसका टेस्ट ज़्यादा कॉफ़ी जैसा है, more hard. इसका टेस्ट इज मोर लाइक एक एल्पेनलीबे वाली टॉफ़ी आती है ना, सो इमेजिन अगर उस एल्पेनलीबे में तुम दूध मिला दोगे तो उसका टेस्ट कैसा होगा? लाटे, एज यू गाइस कॉल इट. सो इट टेस्ट्स लाइक दैट. नाउ आई नो फॉर अ फैक्ट कि ब्रूरीज वगैरह में कॉफ़ी जो बीन्स हैं उसके पैसे लगते हैं, दैट इज़ मोर एक्सपेंसिव. बट इफ़ यू गो टू लाइक फैंसी आउटलेट्स तो फिर दिस शिट इज़ मोर एक्सपेंसिव. This is tough. If the background team can help me and they can tell me कि ये कहाँ से लिया है तो मैं बता सकती हूँ. ये बता देंगे तो पता चल जाएगा. I think इसका कलर भी फीका है and coffee is supposed to be stark. I think this is more expensive. लेकिन एक्सपेंसिव चीज़ है अच्छा. दिखती है? Spend the right amount of money, you'll see it. I mean, look at me. Yeah, but the thing is ना कि this tastes more like coffee, and coffee जितना beans का taste है is more coffee. This is more chocolate. तो अगर सिर्फ हम coffee की बात कर रहे हैं, then I think it is this, because I've tasted some fine coffee, and in fact घर में Vivian was a coffee lover, and जितना उसने मुझे बताया है coffee के बारे में, beans जितने strong होते हैं, that's more expensive. So I think this one. Although my Gen Z self is telling me कि ये Starbucks का चोचला है, so this one, but something in me is telling me this one. So I'd go with this one. I could be wrong either ways, so it's okay. I will go with the, I don't know why, but this one. I was kidding. I so lived the Gen Z way.
रिसेंटली मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि वो सड़क किनारे से ड्यूप सनग्लासेस खरीद लो एंड आई टोल्ड देम नो, क्योंकि सनग्लासेस का क्वालिटी रियली मैटर्स, तो मैं शोरूम से लूँगी. सो इफ़ आई कैन नॉट मेक आउट कि दोनों असली है कि नकली है दोनों. हाँ, ऐसा ना हो कि दोनों लोखंड वाला है एंड आई एम कंपेयरिंग कौन सा वाला है. बट अगर इसमें मुझे फ़र्क नहीं लगता है देन आई एम नॉट गोइंग टू एनी अल्ट्रा लग्जरी स्टोर्स, आई एम बाइंग फ्रॉम लोखंड वाला. नो गाइज, ऑल माई स्टफ इज़ रियल. तो अभी 2 ऑल है, ये टाई ब्रेकर राउंड है. ओह माय गॉड, ये बोल के प्रेशर डाल दिया यार इसने. So one is expensive and one is cheap. This is a little flimsy. This looks cheap, but it's not flimsy. This feels real. This looks real, this feels real. This is where salesmen come into service. Okay. अगर मैं ये पहन के बाहर जा पाऊँ ना और सनलाइट में देख पाऊँ तो I'll give you 100% accurate answer. But ठीक है. Let me look at the light. Okay, this is doing its job. Feels cheap. Also doing the job, but not as good as this, क्योंकि इसमें मुझे flares दिख रहे हैं, like ऐसा sunlight की rays types आ रही है उसमें से. And this is more, वैसे rays इसमें भी आ रही है, but इसकी ज़्यादा stark लग रही है. Okay, last try. Yup, no, I think this is fake. And no, wait, tiebreaker है ये. ये क्या ब्रांडिंग छुपाने के लिए टेप लगाया है इसमें? मैं वही ढूंढ रही थी. अरे यार, this feels real. Fuck it, I'm gonna go with this one. I think this is, sorry, F it. I think I'm gonna go with this one because stability ज़्यादा है, fits better and dark अच्छे से करती है. तो I think both are cheap, but this is comparatively expensive and this is cheaper. पक्का? ये पक्का बोलती है, मेरे को डाउट हो जाता है. I'm gonna cancel out all the noises. I think this one. Please be right. तो इसी के साथ कशिश चैलेंज है. Knew it. But everything else, you see, I have a taste for expensive things, guys. Love it. I loved it. इससे साबित हो गया that I do have a taste for expensive things. I love it. चलो, thank you. Thank you so much.